Good afternoon, everyone. Good Good afternoon, afternoon, sir. sir. Good afternoon. Good afternoon. चलिए, let's not waste time. थोड़ा time निकल गया. We'll start with another topic called as the lacrimal apparatus. ये lacrimal apparatus is the tear producing. जो lacrimal fluid होती है, that is tears. आंसू जिसको कहते हैं ना, वो tears होते हैं. तो ये कैसे tears produce कर तो पूरा एक apparatus होता है, एक पूरा structure है. Lacrimal gland होता है जो secrete करता है lacrimal fluid. और यहाँ पे it is situated here in the upper lateral part of the orbit. तो आपको डायग्राम भेजा ही था, उसको बना लीजिएगा, लिख लेते. let's start on it. Lacrimal apparatus. It consists of the following parts. Number one, lacrimal sac, SAC, lacrimal sac, and lacrimal ducts, DUCTS, ducts. Number two, conjunctival sac, conjunctival sac. Number three, lacrimal puncta, PUNCTA, lacrimal puncta and lacrimal canaliculi. Next, lacrimal sac, lacrimal sac. Next, nasolacrimal duct, NASO, nasolacrimal duct. इसमें एक चीज आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली, एक तो कंजंक्टिवल सैक है. अगर आपने आईज में एकदम आखिरी में यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे आपको एक बिल्कुल पिन होल फोरामेन दिखाई देगा. दैट इज द लैक्रामल पंक्टा. जब टीयर्स होते हैं ना तो वो यहाँ से सिक्रीट होकर दे ट्रैवल हियर लैक्रामल पंक्टा से, फिर वो इधर आ जाते हैं लैक्रामल सैक से, और फिर नेजो लैक्रामल डक्ट से होते हुए they open into the inferior meatus of the nose. तो जब बहुत आंसू आते हैं ना, कभी भी नाक से पानी आता, नाक से भी बहने लगता है आंसू. तो बेसिकली secretion goes into the inferior meatus और वहां से ओवरफ्लो हो जाता है, तो कभी कभी नाक से भी आंसू आ जाते हैं. This is how it is connected. पहला लिख लीजिए, lacrimal gland. Lacrimal gland. It is present in the lacrimal fossa in the lateral part of the roof of orbit. Roof of orbit. Also, the lacrimal gland has two parts. The lacrimal gland has two parts. A large orbital part, a large orbital part. B, a smaller palpebral part, a smaller palpebral part. PALPEBRAL, palpebral part. Next line. Both the parts
are continuous with each other on the lateral margin of levator palpebrae. Levator palpebrae. It has Sir, lateral 10 margin of to 12 levator palpebrae. Levator palpebrae. Which is the muscle, like levator palpebrae muscle. It has 10 to 12 lacrimal ducts. It has 10 to 12 lacrimal ducts which open in the conjunctival sac, which open into the conjunctival sac. The ducts of the orbital part, the ducts of the orbital part pass through the palpebral part before opening in the conjunctival sac. Therefore, removal of the palpebral part is functionally equivalent to removal of lacrimal gland. Next line. The secretions of the lacrimal gland is under control of parasympathetic fibers which reach the gland through lacrimal nerves. Next part है conjunctival sac. Conjunctival sac. It has three parts. It has three parts. Number one, palpebral conjunctiva. Palpebral conjunctiva, where it covers
where it covers the eyelids. Full stop. It is thick and highly vascular. It is thick and highly vascular and is adherent to tarsal plate, Tarsal, adherent to tarsal plate. Also, it is used to examine for anemia. It is used to examine for anemia. अब यहाँ देखते हैं एनीमिया लाली यहाँ पे या कभी कुछ पकड़ फिर जा तो अब देखते हैं इसको पलक को उल्टा देते हैं एकदम लाल लाल दिखाई देते हैं दैट इज ऑल palpebral conjunctiva. Number 2, bulbar conjunctiva. Bulbar conjunctiva. It covers the eyeball. It covers the eyeball or sclera. Full stop. It is thick, transparent, and loosely attached full stop. It has a special affinity, affinity, affinity for bilirubin and is used to examine for evidence of jaundice. Evidence of jaundice. Number 3, fornix. 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 अगर आप अपने आईज के अंदर की तरफ ये एकदम लैटरल ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे ओवरलैप ये पॉइंट वहां पे जहाँ पे पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा फोल्ड होके बल्बर कंजंक्टिवा पे आपको बहुत क्लियरली थिकन पार्ट दिखाई देगा. Fornix. It is where WHERE, the palpebral conjunctiva reflects, reflects or folds upon itself on to the bulbar conjunctiva. The lacrimal canaliculi. Lacrimal canaliculi. It is about 10 millimeters in length. It is about 10 millimeters in length and has a dilatation known as ampulla. So they open into the lacrimal sac
Then lacrimal sac. Lacrimal sac. It is about 12 millimeters long. It is about 12 millimeters long and 5 millimeters wide. 5 millimeters wide. It lies posterior to medial palpebral ligament. Full stop. It is covered with lacrimal fascia. It is covered with lacrimal fascia. Then nasolacrimal duct. Nasolacrimal duct. It is a membranous passage. It is a membranous passage about 18 millimeters long. It runs downwards, backwards, and laterally to open into the inferior meatus of nose. Inferior meatus of nose. Stop. Its opening is guarded by folds of mucous membrane known as valve of Hasner. Hasner. Valves of Hasner. यशवी गुप्ता, अपने आप को फुल स्क्रीन से हटाइए. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर. यस सर. ये यशवी गुप्ता कौन है? यशवी गुप्ता कौन है? यशवी गुप्ता, are you a student of BPT first year?
Yashvi Gupta, are you a student of BPT first year? अपने आप को फुल स्क्रीन पे मत लाया करिए. So the second topic for today, ये तो हो गया खत्म. The second topic जो important है, that is extraocular muscles of the eyeball. Extraocular muscles of the eyeball. ये एक्स्ट्रा मसल्स जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं, सी देयर आर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर एज वेल एज जो वॉलंटरी मसल्स हैं, एंड देयर आर इनवॉलंटरी मसल्स ऑफ द आईबॉल. जो आईबॉल का मूवमेंट करते हैं ना, सी अगर हमें इस तरफ देखना है या आईबॉल को इधर मूव करना है या आईबॉल को रेस करना है या आईबॉल को डिप्रेस करना, इनको या रोटेट करना. एक तो लोग ऐसे रोटेट कर लेते हैं, दैट इज एक्सटॉर्शन. ये जो मूवमेंट अंदर अंदर घुमा लेते हैं, दोनों आईज को अंदर ही अंदर घुमा लेते हैं, दैट इज इंटॉर्शन. ये सारा ये जो होता है, इट इज थ्रू द इट इज बाय द extraocular muscles of the eyeball, and these are 6 in number. ये 6 होती हैं, and these are voluntary. 2 रेक्टाइल, सॉरी 2 ऑब्लिक और 4 रेक्टाइल मसल्स. और इसलिए जल्दी पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके पास पेशेंट्स फिजियोथेरेपी में आएंगे, खासकर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है, वो कहेंगे कि इनकी जो एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल, इनकी थोड़ा फिजियोथेरेपी करा दी ताकि स्ट्रेंथनिंग हो जाए. और इनमें से अगर कोई पैरालाइज हो जाती है ना मसल, इट लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज स्क्विंट. स्क्विंट और स्ट्रेबिस्मस, जिसको हम लोग हिंदी में भेंगा कहते हैं. भेंगा कहते हैं, ऐसा लगता है कि वो इस तरफ देख रहे हैं, आईबॉल हैज मूव्ड दिस वे बट एक्चुअली दे आर लुकिंग स्ट्रेट. तो लेट्स do the extraocular muscles of the eyeball. लिख लीजिए. The structures present in the orbit orbit ये वाला part, this is the part known as the orbit, is eyeball, which is oval in shape. Number 2, limbus, limbus. It is the point in the eyeball. It is the point in the eyeball where the sclera is continuous, with the cornea. And is also known as sclerocorneal junction. Sclerocorneal junction. Number 3, the extraocular muscles. The extraocular muscles are concerned with movement of eyeball. These muscles are voluntary. They are
They are superior rectus, superior rectus, inferior rectus, medial rectus, lateral rectus, superior oblique, inferior oblique. These are the 6 extraocular muscles which are voluntary in nature, and they help in moving the eyeball. Next line लिख लीजिए. The levator palpebrae superioris, levator palpebrae superioris muscle elevates the upper eyelid is not an extraocular muscle. Is not an extraocular muscle, but is studied with them, as it is present in the region. आपको कोई और भी मसल याद आती है जो उस रीजन की नहीं थी, बट हमने पढ़ी उसी रीजन के साथ साथ है, बिकॉज इट हैपेंड टू बी प्रेजेंट इन दैट रीजन. एक मसल और भी तो होती थी जो उस रीजन की नहीं थी, बट बीइंग प्रेजेंट इन दैट रीजन उसी के साथ हमने पढ़ी थी. जिसके पैरालिसिस की वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाता है. सर लेवेटर स्कैपुलाई. हाँ, और ट्राई करिए. आकृति बोलिए. एनीवन एल्स? Serratus anterior. यस, सेरेटस एंटीरियर. हमने पेक्टोरल रीजन के साथ पढ़ी थी ना उसको, बट इट इज नॉट अ पेक्टोरल मसल. इट इज प्रेजेंट इन द पेक्टोरल रीजन, इसलिए उसके साथ पढ़ा. गुड. नेक्स्ट लाइन. The involuntary muscles are a superior tarsal muscle, B inferior tarsal muscle. थोड़ी देर पहले एक आपको डायग्राम भेजा था, एक छोटा डायग्राम था which showed the origin of the 4 recti muscles. The 4 recti muscles. They take origin from a tendinous ring. वो डायग्राम के लिए जगह छोड़ के आगे लिख लीजिए. Origin of the 4 recti muscles. Origin of the 4 recti muscles. The 4 recti muscles take origin from a common
annular tendinous ring. Common annular tendinous ring. Full stop. This ring is attached. This ring is attached to the orbital surface of the apex of orbit. Full stop. It encloses the optic canal and middle part of the superior orbital fissure. Full stop. The optic nerve and ophthalmic artery, OPTHALMIC ophthalmic artery runs through the optic canal. Runs through the optic canal. Next, origin of superior oblique muscle. Origin of superior oblique muscle. It arises from the body of sphenoid, from the body of sphenoid bone, SPHENOID, sphenoid bone. Next, origin of inferior oblique muscle. It arises from the floor of the orbit. It arises from the floor of the orbit lateral to the opening of nasolacrimal duct in the inferior meatus of the nose. तो ये origin हो गई जो 6 extraocular muscles की. सर inferior क्या आगे repeat कर दीजिए. Inferior meatus of the nose. ये अभी हम लोगों ने देखा जो पढ़ रहे थे lacrimal apparatus, तो nasolacrimal duct यही तो ओपन होती थी in the inferior meatus of the nose. इसी के पास से origin होता है inferior oblique muscle. Obliquely, insertion of the 4 recti muscles. Insertion of the 4 recti muscles. The recti muscles are inserted into the sclera, SCLERA, into the sclera a little posterior to the limbus. A little posterior to the limbus. Next, insertion of superior oblique muscle. Insertion of superior oblique muscle. It passes through
It passes through the fibrocartilaginous pulley attached to the trochlear fossa of the frontal bone Full stop. The tendon passes laterally, downwards and backwards to be inserted on the sclera behind the equator. Next, insertion of inferior oblique muscle. To be inserted से एक बार repeat कर दीजिएगा. To be inserted on the sclera, SCLERA, on the sclera behind the equator, EQUATOR. Next, insertion of inferior oblique muscle. Insertion of inferior oblique muscle. It is inserted close to superior oblique muscle. Nerve supply. Lateral rectus is supplied by abducent nerve. That is the sixth cranial nerve. Bracket में लिख लीजिए, sixth cranial nerve. Sir, repeat कर दीजिए. Lateral rectus is supplied by abducent nerve. Bracket में sixth cranial nerve. Superior oblique is supplied by trochlear nerve. Bracket में fourth cranial nerve. Next line. Superior rectus, inferior rectus, medial rectus, and inferior oblique are supplied by oculomotor nerve. That is the third cranial nerve. तो 3, 4, 6 इनको सप्लाई करती हैं. चलिए आज हम अभी यहाँ समाप्त करेंगे. because I have another class to take this now. Next time we'll quickly finish this and
carry on with you. Please अपना पढ़ते रहिएगा.